Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying about gender, that is masculine, feminine. So let's just begin with this. Okay. So the title of our chapter is the noun gender, right? Just work in pairs and rewrite the following sentences by changing the noun into feminine gender. हमें feminine gender में जैसे father gave me a gift, you can write in place of this that mother gave me a gift. Okay. Instead of father, you may write mother. Mother gave me a gift. Right. The king loves prince. The king है. The king loves prince. You may write the king loves princess. It is your wish if you want to write king का queen. Right. The queen loves prince. ये भी लिख सकते हैं आप. Right. तो जेंडर टेल अस कि वेदर द नाउन्स वो क्या है, मेल है, फीमेल है या फिर नॉन लिविंग थिंग. You just read the following sentences carefully. First is Ankur is a poet. Ankur एक poet है. Second, Neha एक poetess है. Right. My parents are happy. Fourth is the balloon is on the table. Now, sentence one में अंकुर और poet जो है ये denote the male person. So they are said to be what? They are said to be the masculine gender. Right. In second sentence, Neha denotes poetess. Neha and poetess, they basically both denote female person. So they are said to be of what? They are said to be of the feminine gender. Right. In sentence 3, जो parents हैं वो common है and it is said to be a common gender, right? And in sentence 4, balloon और table ये क्या है, non-living things हैं, so they are said to be of the neutral gender. तो जो चीजें common है वो common gender, जो चीजें non-living है उनको हम neutral gender बोलते हैं. Thus we can say that genders are of 4 types. The first is the masculine gender, जो कि हमको male को denote करता है. A noun that is the name of any male person, or you can say animal, it is called the masculine gender, जैसे कि boy, man, lion, dog, etc. Right. Second one is feminine gender, that is वो noun which is the name of any female person or animal, it is called the feminine gender, जैसे कि girl, cow, woman, etc. Right. Then the third comes to be neutral gender, a noun that is the name of some non-living thing, इसको हम क्या कहेंगे, neuter gender, like pen, book, copy, chair, etc. Right. Then the fourth one comes to be a common gender, a noun that is a common name. किसका है, common का है, that is basically the name of a person, place, or it you can say maybe it can be either male or female. इसको हम बोलते हैं common gender, जैसे कि teacher, doctor, friend, child, etc. engineer भी हो सकता है. Right. So doctor examine the patient, doctor कोई भी हो सकता है, male or female. The teacher teaches in the class, teacher can be a male and a can be female. Formation of feminine from masculine, मतलब आप feminine से masculine में कैसे पहुंचेंगे. The first one is the following masculine nouns form their feminine by just adding ESS to the masculines को सिर्फ ESS ऐड करना है. जैसे वेटर का वेटरेस, आप देख सकते हैं ESS. एम्प्रर का एम्प्रेस रेस, ESS. टाइगर का टाइग्रेस, राइट. प्रिंस का प्रिंसेस, राइट. मास्टर का मिस्ट्रेस, राइट. फाउंडर का फाउंड्रेस, राइट. लायन का इट्स लायनेस, एक्टर का इट्स एक्ट्रेस, देन पोएट का पोएटेस, देन हंटर का हंट्रेस, ESS ऐड कर दिया. गॉड का गॉडेस एंड शेफर्ड का शेफर्डेस, राइट. अब कुछ मैस्कुलिन नाउन्स होते हैं जिनके स्पेशल फेमाइन नाउन्स होते हैं, जैसे कि डॉग का बिच ही रहता है, सर का मैडम ही रहता है, जेंटलमैन का लेडी होता है, विडोवर का विडो होता है, राइट. विडो वी ऑल नो विडो कौन होती है, विधवा जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई हो. सन का डॉटर, राइट. डियर का डो, अंकल का इट्स आंट, मिस्टर का मिसेस, राइट. मैन का वुमेन, फादर का मदर, राइट. बॉय का गर्ल, कॉक का हेन, राइट. ब्रदर का सिस्टर होता है. हॉर्स का मेयर, बुल का काउ, नेफ्यू का नीस, भतीजा भतीजी, राइट. किंग का क्वीन, वी ऑल नो हस्बैंड का वाइफ, राइट. कुछ फेमाइन नाउन्स होते हैं, दे आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड फ्रॉम वर्ड विच इज बिफोर और आफ्टर, जैसे कि मिल्क मैन को हटा के हम मैन को हटा के मिल्क मेड, मैन सर्वेंट को इट्स मेड सर्वेंट, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, राइट. ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर, फिशरमैन का इट्स फिशर वुमेन, राइट. वॉशरमैन का वॉशर वुमेन, राइट. There is a quick short recap that nouns के 4 genders होते हैं, masculine, feminine, common and neutral gender.
and we make feminine gender by adding ESS to the masculine nouns. Moving on to the exercise, first we'll be doing the tick the correct options, right? How many types of gender are there? There are 4 types of gender, right? Masculine gender जो है ये basically क्या है, मेल्स के लिए है, whereas neutral gender जो है वो किसके लिए है, नॉन लिविंग के लिए. फेमाइन जेंडर फीमेल्स के लिए. दिस इज द फेमाइन जेंडर, दैट इज फेमाइन जेंडर का क्या है होगा, फॉक्स. दिस इज द कॉमन जेंडर, पेरेंट्स और टीचर बोथ. You have to write down true and false. Man is an example of masculine gender, of course it's true. Chair is an example of common gender, of course it's false क्योंकि वो neutral gender है. Teacher is an example of neutral gender, of course it's true. Geeta is an example of feminine, of course it's true. Right? So that was all about gender. I hope you all understood this. Please keep revising it and please keep reading each day and stay blessed. Thank you.